Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे इंग्लिश रो ग्रामर को प्रैक्टिस करिया फॉर योर एग्जाम SSB जूनियर असिस्टेंट एंड क्लर्क. ठीक अछि, चलंतु ट्राई करंतु. क्वेश्चन नंबर 1. You are dash responsible for this condition. Themselves, yourself, itself, myself. Which option is your right answer? You are yourself responsible for this condition. ऑप्शन बी समस्त चूज कर योरसेल्फ कहीं जाला देखंतु यू आर सब्जेक्ट करे भर आसीबो देन योरसेल्फ माने कोन एही यू रो ही एम्फाटिक केस अर्थात अधिक एम्फासाइज करा जाइछि माने अधिक जोर दिया जाइछि तुमे निजे रेस्पोंसिबल अट एही प्रकार परिस्थिति पे तुमे निजे ही दायी अट ए सेंस रे यू रो योरसेल्फ. दिस इज एम्फाटिक केस रो कांसेप्ट. Okay, you know yourself. Next. When I solved the sum test, I was very happy. Which option is good? When I solved the sum, myself, herself, itself, oneself. It कौन अच्छे subject कौन I रो emphatic case कौन है जो I रो myself हबो. So option A हबो यार right answer. Okay, अर्थात कौन when I solved the sum यही सम को जेतेले मु निजे ही सॉल्व कली आई वाज वेरी हैप्पी मधियो खुशी थिली. राइट, ऑप्शन ए एम्फाटिक केस रो कांसेप्ट एम्फाटिक केस प्रोनाउन रो. नेक्स्ट. भानु मेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन dash when he was 16. Which option is your right answer? Itself, oneself, himself, herself. Which option is your? Try करंतु. भानु मेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन देन भानु कौन कला गोटे वर्किंग मॉडल को तैयारी कला कहार गोटे एरोप्लेन रो से निजे कला. तो ये भानु रो जेंडर कौन आमे प्रथमे प्रायोरिटी दबा प्रथमे मेल को प्रायोरिटी दबा. तो मेल पई कौन हिजो भानु रो हिमसेल्फ. भानु मेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन हिमसेल्फ व्हेन ही वाज 16 जते बेले से 16 वर्ष रो थिला. ठीक अछि, हिमसेल्फ इज योर राइट आंसर. ऑप्शन सी समस्त चूज करिसेंती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करंतु. द चिल्ड्रेन हैड मेड ए मेस माने जो ओलिया करबा ऑन द फ्लोर को. सो आई आस्क्ड सना टू क्लीन डेस ऑफ. इठी आपनकर केउ प्रोनाउन आसीबो देम इट इट्स दे. व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? चिल्ड्रेन माने कोन करले माने ओलिया करिथिले. दैट्स व्हाई ए मेस पई सना टू क्लीन मेस ऑफ माने कोन एही फ्लोर को जो ओडिया करथिले सेटा को सफा करिया पई कुहा गला. तो सफा करिया पई एठी कोन आसीबो इट आसीबो. इट इज योर राइट आंसर. ओके, क्लीन इट ऑफ इज योर राइट आंसर. बुझियला. ओके, नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5. देयर वाज ए लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर. रबिश माने मध्ये कोन सही ओडिया आवर्जना कथा. सो आई आस्क्ड संगीता टू स्वीप इट अवे. इट इज योर राइट आंसर. ओके, sweep it away have your right answer. Next question number 6 try karantu. Kavya picked off all the toys and put this in a box. It, that, them, this. Which option is your right answer? Kavya picked up all the toys. समस्त toy को से उठेला एवं से रखिबो सेही बॉक्स रे. ताले कोन हिजो देखंतु toys अछि. This is your plural and put them is your right answer. Put them कोन only लिविंग थिंग्स पाई ही आसे कि ओके किछि ऑब्जेक्ट पाई मध्ये हमें देम यूज करि परिबा. पुट देम इन ए बॉक्स. राइट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट जीवा. इफ चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग टेलीविजन दे कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम फॉर दिस. चिल्ड्रन अछि ना. ओके, देन ट्राई करंतु वन सेल्फ देमसेल्व्स himself, itself. Which option is your right answer? Children plural अछि. ओके, तो सेमानकर रिफ्लेक्सिव केस को हम यूज करबा कोन है जो प्रॉब्लम फॉर themselves. इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आसीबो themselves. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. ओके, समस्त चूज करछन ऑप्शन बी. नेक्स्ट. One must keep dash promise. One must keep
S promise. Once, then once apostrophe S, it's the. One ro एठी कौन यूज करिबा possessive pronoun यूज करिबा तो one रो possessive pronoun होची once promise is your right answer. Okay, next, you need, your need is certainly greater than, कौन है एठी your need is certainly greater than mine है एही mine रो अर्थ कौन mine होची एक possessive pronoun my होची एक possessive adjective एही mine रो अर्थ होची my need your need mine कहबार अर्थ होची my plus need mine is your possessive pronoun जते बेले आपण कंपैरिजन करूचंती ताले सेम केस रखिबे एठी कोन अछि possessive केस रे अछि ओके एठी आल्सो possessive केस रे रहबो बट pronoun रो केस रे रहबो ओके बुझियला ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, the assistant in the library picked up the books from the tables and put theirs back on the shelves. Which option is your right answer? They, it's, them, it. They, it's, them, it. What is it? Put them back. Put them is one. Kahi na ithi. The assistant in the library picked up the books ro katha kuha gala plural from the table and put them कौन कहली मु लिविंग थिंग्स सहित कौन सी ऑब्जेक्ट जेंति बुक्स एठी कुआ जाय पुट them back on the shelf is your right answer. Okay, ठीक अछि आंसर ऑप्शन सी समस्त चूज करछंती. नेक्स्ट, the flat dash is nice but the approach road is too narrow and congested. The flat आसिला ओके फ्लैट कौन गोटे न्यूटर यार कौन से जेंडर नहीं हमें एठी हरसेल्फ हिमसेल्फ किबा वन पई वन सेल्फ आसे लगै परिबा नहीं दैट्स व्हाई इटसेल्फ हबो कौन हे जिवो इटसेल्फ ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. द फ्लैट इटसेल्फ emphasize करा दो emphatic case. The flat itself is nice but the approach road is too narrow and congested. Okay, बुझिउची. Next, only days girls were present in the class today. Kuhantu a few, several of, many, a lot. A lot of हेबो नाही कारण बहुत गुडाय कथा कहूची. Many also हेबो नाही कारण एठी only रो कथा कहू माने किछि. A few हे परिबो और several of हबो जदि several of हबो एहा परे आर्टिकल यूज आसीबा कथा the girls कहबा पई पड़िबो एवं एटा भी हमें एलिमिनेट करबा a few is your right answer. Only a few माने किछि ठीक अछि. Only a few girls were present in the class today is your right answer. Option A is your right answer. Okay, बुझियला. Next, I have nobody as I can confide in. कुहंतु whoever, which, whom and whose. Which option is your right answer? I have nobody, then देखंतु I have nobody आसिला then blank रही देन यहाँ पर कौन आरंभ होइछि एठी सब्जेक्ट आरंभ होई जाइछि. यदि सब्जेक्ट आरंभ होइछि देन आपण कहा द्वारा कनेक्ट करिवे और रिलेट करिवे whom ऑब्जेक्टिव केस पे यूज करिवे. I have nobody whom ता कोन ऑब्जेक्टिव केस पे आसीबो. I can confide in. ओके, which आपणकर जनरली गोटे नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल पे आसीबो. whose गोटे पोजीशन पे जहार whoever माने किए भी who ता तो सब्जेक्टिव केस पे आछी तो who हेबो नाही. ऑप्शन सी whom इज द राइट आंसर. ऑब्जेक्टिव I have nobody देन एठी ऑब्जेक्ट रो जगह आसीबो ना दैट्स व्हाई हमें whom कहबा. I can एंड जदी whom ऑब्जेक्ट रो जगह आसीबो यहाँ पर सब्जेक्ट आरंभ हो जदी whoever हे थांता एठी गोटे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही आपनकर आरंभ होई थांता सेही सेंस रे मध्ये हमें कहि परिबा. अरे होंदी नै. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The man this book you are reading is my father. The man देखंतु this book कहिछि the man एठी कोन हिजबो गोटे पोजीशन सेंस रे हम यूज करियो. The man whose book माने जहारो पुस्तक टी सेही सेंस रे. The man whose book you are reading is my father. बुझियला who टा सब्जेक्टिव केस पे आसीबो whom ऑब्जेक्टिव केस पे आसीबो दैट गोटे रिलेटिव प्रोनाउन.
ठीक अच्छे बोथ केस पे आसे आपनकर जे लिविंग नॉन लिविंग सेई सेंस रे एटी हुज गुटे पोजीशन यूज करबा ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर नेक्स्ट दिस इज द गर्ल डैश इज गोइंग टू आईआईटी दिल्ली whom that who which option is the right answer this is the girl dash is going to IIT Delhi try karantu this is the girl who is एटी कोन अछि verb अछि माने एटी कोन आसीबो सब्जेक्टिव केस आसीबो तो सब्जेक्टिव केस पे कोन यूज करा जाय who यूज करा जाय who is going to IIT Delhi बुझियला नेक्स्ट S was present in the hall took part in the voting process whoever whichever wherever whatever whoever subjective case में हमें कौन यूज करिबा whoever माने जे भी अच्छा एठारे जे भी प्रेजेंट अच्छा और प्रेजेंट थिलो माने वोटिंग प्रोसेस रे पार्ट हेबे सेही सेंस रे whichever माने कोन जहां भी हो wherever माने जेउ ठारे भी हो whatever माने जहां भी हो सेही सेंस रे तो एठी whoever इज राइट आंसर ओके ऑप्शन ए समस्त चूज करि छथि नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 17 the passengers dash left Paris airport at 6 arrived in Rome an hour later the passenger left asila कोन हबो लेफ्ट asila माने verb पूर्व कोन आछो सब्जेक्ट पई who यूज करा जाय ऑब्जेक्ट पई whom यूज करा जाय दुटा मन रखंतु who जे आपनकर पोजीशन पई ओके whom आपनकर ऑब्जेक्ट पई who आपनकर सब्जेक्ट पई मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 I am your two friend ताको क्वेश्चन टा कले कोन हिजबो aren't I हिजबो ठीक अछि amn't I तो नहीं aren't I हबो I am your two friend aren't I is your right answer okay next I am allowed to take photographs inside the church so it will be I am अछि कोन हिजबो aren't I हिजबो option B is your right answer aren't I is your right answer okay next question you have memorized your speech dash you have अछि तो एटा कोन हिजबो haven't you हिजबो नेगेटिव क्वेश्चन कला बेले पॉजिटिव थिले नेगेटिव करिवे नेगेटिव थिले पॉजिटिव करिवे जहा हेल्पिंग वर्ब अछि सेटा नै करिवे नेक्स्ट he is your brother isn't he he is the right answer option A is your right answer question tag next he is dash poorer than all his friends much very more most which option is the right answer interesting question he is dash poorer than all his friends he is much poorer habo ठीक अछि देखंतु एटी कोन अछि कंपैरेटिव डिग्री अछि कंपैरेटिव डिग्री पूर्व हमें मच यूज करियो एरी आपनकर पॉजिटिव डिग्री पई जेहेतु ऑलरेडी एटा er रो फॉर्म रे अछि तो एठी आपन मोर यूज करि परिबे नाही मोस्ट आपनकर सुपरलेटिव डिग्री पई यूज होय दैट्स व्हाई मच इज मोर राइट आंसर नेक्स्ट द lack of regular academic session has meant that in 2020 the country has had the dash share of students who have attended the educational institute which option is last lower low lowest which option is lowest share ना lowest because कहीं एठी दो असला दो पर अपन कौन यूज करंती सुपरलेटिव डिग्री lowest is your right answer okay कौन है जो lowest next I like both tea and coffee but prefer the कौन letter is letter ठीक अछि फॉर्मर लेटर सेमिति लास्ट तो हबनी ठीक अछि लास्ट हबनी सुपरलेटिव पे यूज करा जाउछि sorry for that I like both tea and coffee but prefer the letter is least also आपनकर हबनी एंड एही लेटर मध्ये हबनी ऑप्शन सी वाला लेटर LATTER letter is your right answer clear option C is your right answer next question number 25 milk is less than any other food milk is dash then आसिला माने कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करबा तो कंपैरेटिव डिग्री पई कोन यूज करा जाय मोर आसीबो मोर milk is more nourishing than any other food ए जो nourishing माने अधिक पुष्टि योग्य सही सेंस रे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट
The company has appointed twice as women as men. Twice as many as ହେଇଯିବ କି? As many women as men. As many ହବ. Okay? As many is your right answer. Because ଏଠି କ'ଣ? This is your countable sense ରେ ଅଛି. Plural sense ରେ ଅଛି. ତ ଆମେ many ୟୁଜ୍ କରିବା. ଠିକ ଅଛି? much ହବନି uncountable ପାଇଁ ଆସିବ ତ ଏଠି କୌଣସି comparative degree also ହବନି କିମ୍ବା superlative degree ହବନି. As positive degree as ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା. Okay? Next. This fabric is dash so cheaper than other fabric. This fabric is as good as so cheaper than other fabric. As good as is your right answer. Option A is your right answer. As good as is your right answer. Okay. Option A habo your right answer. बुझिहेला. Next jiba question number 28. The hall was spacious dash to accommodate all the guests. Try karantu. The hall was spacious dash to accommodate all the guests. It means କ'ଣ? Spacious enough ହବ. ଦେଖନ୍ତୁ adjective ଆସିବ ମାନେ adjective ପରେ ଆପଣଙ୍କର enough ଆସିବ. And ଆମେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ also rather fairly ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହବା ଏହା adjective ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ଏବଂ enough ପରେ to plus verb one ଆସିବ. ତ ସେଇ ସେନ୍ସ ରେ option B is your right answer. Okay? Next question. My teacher is the dash of all. तो ଆସିଲା ମାନେ superlative degree ହବ କି ନାହିଁ? Then kindest. The kindest of all is your right answer. Option A is your right answer. Next. My mother is the superlative degree कौन है? Biggest. Option C. The biggest inspiration in my life. Biggest is your right answer. Next try करंतु. Akbar had a dash rain than Babur. माने इटी comparison करा जाइछि. Longer कहि परिबा. Akbar had a longer reign माने जो शासन व्यवस्थाटा शासन कालटा देन बाबर. Option B is your right answer. Longer is your right answer. Longest हबनी किंवा long हबनी. Positive degree हबनी. Next. This is one of the dash remarkable cases I have handled. One. This is one of the ता आसीगला superlative degree हिजबो. Okay. तो पर कोन हुए? Superlative degree most हिजबो. The most remarkable cases I have handled. Next. I was determined not to stay in hospital for any longer as strictly necessary when then THEN गोटे THN अछि and THA देखंतु गोटे comparative degree आसिला then comparative degree पर हमें then यूज करंती सेटा क्यों then THAN वाला ठीक अछि यार अर्थ होछि परे ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ओके नेक्स्ट. The more tired you are the dash is to concentrated. ଯେତେବେଳେ ଦ ସହିତ comparative degree ଆସିବ ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ next clause ରେ ଦ ସହିତ comparative degree यूज କରିବା. ତ ଏଇଠି comparative degree ପାଇଁ harder, hardest, more harder ନା hard. hard ତ positive degree ହେଇ जाଉଛି. hard ହେବ ନାହିଁ. ओके more harder नुह harder ହେଇଯିବ because er ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ more यूज କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ऑप्शन ए ହୋଇଯିବ राइट आंसर. harder is to concentrate. ओके द सहित comparative degree then next clause रे ମଧ୍ୟ द सहित comparative degree ର concept. Next. I wasn't feeling well yesterday but I feel a little dash today. Which option is your right answer? I wasn't feeling well yesterday but I feel a little dash today. I feel but I feel a little कौन है जो देखंतु गत काली अपेक्षा आज को कंपेयर करा जाउछ माने बेटर कहबे लिटिल बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो आपण कंपेयर करूछंती कि नै गुड हे जाउछि पॉजिटिव बेस्ट हे जाउछि सुपरलेटिव बेटर सहित मोर रो आवश्यकता ही नै. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट. The new typist is dash efficient dash the previous one. The new typist is as efficient as positive degree as use करिवे comparison by previous one. As show हेबो नाही such as कोनोसी cause and effect ପାଇଁ show that result ପାଇଁ आवश्यकता नाही. Option A हो जो right answer. Next. Even on an overcast winter's day it is at least 10 times dash outside than inside a standard office. एठी कोन आसी गला देखंतु then आसी गला
माने आपन को माइंड रे रहबार अछि दिस इज फॉर योर कंपैरेटिव डिग्री तो कंपैरेटिव डिग्री कोन हो कोंतु कंपैरेटिव डिग्री व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर इते देखंतु ब्राइटर भी अछि ऑप्शन सी डी सेम अछि ना सेम अछि तो ए दुटा हबो ओके ब्राइट पॉजिटिव ब्राइटेस्ट होची आपनकर सुपरलेटिव हबो ना नेक्स्ट either side of the road dash lined by two shops either side of कोन एठी preposition पर जहाँ आसीबो ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्टिव केस पे आपनकर वर्ब आसीबो नाही ऑफ पूर्वरु अछि either होची either साइड either माने कोन दुईटा साइड रो जे कोनसी गोटिए इट मींस दिस इज सिंगुलर में हमें सिंगुलर यूज करबा कोन हिजबो इज हबो ना हेज हबो प्लूरल कटिला हेज जदी यूज करबा हेज लाइन माने कोन रोड टा कोन निजे निजे ही परिबोनी माने चूज करबा पई माने शॉप उडा कोन निजे निजे ही बट पैसिव सेंस यूज करबा दैट्स व्हाई इज द राइट ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर बुझियला ऑप्शन ए काई हबो नेक्स्ट दिस इज वन ऑफ द matters that dash me the most देखंतु दिस इज वन ऑफ द मैटर्स पर जेतु इठी रिलेटिव प्रोनाउन दैट आसी जाईची हमें ऑफ पूर्वरु वन को कंसीडर करबा नाही ए मैटर्स को कंसीडर करबा ए मैटर्स एठारे प्लूरल दैट्स व्हाई हमें प्लूरल यूज करबा इज सिंगुलर एज सिंगुलर डिस्टर्ब्स सिंगुलर आर डिस्टर्बिंग इज योर राइट आंसर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 second hand furniture dash here at reasonable price second hand furniture ए फर्निचर ता होची आपनकर सेकंड हैंड एट्रिब्यूट सेंस रे फर्निचर होची बड अनकाउंटेबल मींस सिंगुलर पे सिंगुलर वर्ब हो कोन हिजबो सिंगुलर प्लूरल कटिला एज सोल्ड ना इज सोल्ड माने फर्निचर ता कोन निजे निजे बिक्री होची परफेक्ट बिक्री ही जाई छी हबो नाही एज सोल्ड एटा हम पैसिव रे रखिबा इज सोल्ड इज राइट you are at a reasonable price बुझियला ऑप्शन सी काई हबो नो डाउट नेक्स्ट इबा क्वेश्चन नंबर 41 more than half the drain has been dead which option is was is have has देखंतु more than half एमिति जहा भी किछि फ्रैक्शन आसीबा परे या परे नाउन आसी होची तमे तो एठी आपण कोन करिवे एही अनुसार यूज करिवे ड्रेन टा कोन आपण कर एठी सिंगुलर सेंस रे अछि बीन अछि हमें हैज यूज करबा हैज बीन यूज प्लूरल थिले हैव ही थांता ओके बुझियला नेक्स्ट द चिल्ड्रंस सीरीज डेस रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स कोन द चिल्ड्रंस सीरीज एठी कोन सीरीज ता आपण कर सीरीज होची बटे सिंगुलर हबारु एठी इज recommended for young readers okay आर प्लूरल हेज सिंगुलर काहे हेला नै बुझि परले काहे ना सीरीज टा केबे निजे निजे रेकमेंड हबोनी रेकमेंड करा जिवो करा जाए ता पैसिव रे रहइबो हेज सहित वर्ब 3 असले कोन होय हेज सहित बीन आसीबो वर्ब 3 असले दैट इज पैसिव हेज सहित डायरेक्टली वर्ब 3 आसीबो दैट इज टेंस परफेक्ट टेंस रे रहइबो ना दैट्स फाइन नेक्स्ट एवरीवन इन द फैमिली has been questioned about that theft which option is the right answer everyone in the family been achi has been questioned it is singular has asbo okay it have plural are plural is soito been ro uses in okay next ba yes of these boys is doing anything worth while देखो anything गोटे नेगेटिव राशि गला these boys माने कोन एटा दुई जण हे परंती किबा मोर देन टू हे परंती आमे नेगेटिव को ही जिबा तो नो नै जिवो एनीथिंग ता आपणकर नेगेटिव पई आसीबो समथिंग ता पॉजिटिव पई आसीबो ओके एइदर दुई जनक पई ईच मध्य दुई जनक रु जणे ईच माने प्रत्येक बोथ माने प्लूरल ओके सो नोन इज द राइट आंसर नोन असले मध्य आपणकर वर्ब सिंगुलर ही रहिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्राई करंतु 45 द मेजॉरिटी is that the country can progress under able leadership the majority gote collective sense re अछि then going to have believe is believing beliefs जदि एठी आपण भाबिबे गोटे कथा चिंता करिवे जदि कलेक्टिव नाउन रो हम केमिति सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करन जदि यूनाइटेड सेंस रे आसीबो दिस इज वर्ब सिंगुलर डिवाइडेड सेंस रे ले
प्लूराल तो एठी कलेक्टिव नाउन आपनकर यूनाइटेड सेंस रे अछि बिकॉज़ से बिलीव करन जे प्रोग्रेस केमिति हबो बट नो एठी द मेजॉरिटी रे गोटे एक्सेप्शन रहउचे यूनाइटेड सेंस रे हेले मध्य हमें प्लूराल यूज करिवा कोन यूज करिवा प्लूराल यूज करिवा तो आई थिंक जदि प्लूराल यूज करिवा ताले कोन हे परिबो बिलीव हबो ओके और आपनकू बिलीव्स लागुच कि जदि सिंगुलर करिवा बिलीव्स हबो कि व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर progress under the above leadership have believed is believing the majority is believing जेहेतु गोटे विश्वास करवा एटा तो आपनकर जनरल गोटे फैक्ट और गोटे ट्रुथ रे रहइबो हम प्रेजेंट सिंपल रे रखिबा परफेक्ट किमा कंटिन्यू हबो नाही तो एठी ऑप्शन डी हबो और ऑप्शन बी हबो ओके सिंगुलर हबो और प्लूरल हबो मु भाबुची एठी ऑप्शन बी ही हबो बिकॉज़ मेजॉरिटी टा जदियो यूनाइटेड सेंस रे अछि किछि एक्सेप्शन पे हमें एटा यूज करि परिबा आपन कोन लागुची यार कमेंट सेक्शन रे आपन जणाई परिबे विथ लॉजिक दे परिबे आपन ओके नेक्स्ट plenty of information about the flora and fauna of India is available in this book what information कोन सिंगुलर कि नो information singular that's why is use करिवा is available in this book next man dash a strong desire to accumulate wealth man man कोन अछि सिंगुलर अछि a man तापर कोन आसीबो सिंगुलर verb आसीबो has the possession sense रे has is your right answer next our salaries dash increased over the years our salaries plural okay have increased have सहित verb 3 have increased each increase each over the years okay clearly बुझियला next question number 49 the bodies dash identified as those of two suspected drug leaders where head have was which option is your right answer the bodies were identified option A is your right answer were identified as those of two suspected drug leaders because it is plural आम यूज करिवा ओके हेड हबो नाही कारण हेड सहित verb 3 कोन बॉडी टा निजे निजे आइडेंटिफाई हबो नाही प्रेजेंट रे आल्सो जदि हम देखिबा एटा भी हबो नाही एटा सिंगुलर आसी होछ हबो नाही सो से सेंस रे वेयर इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करंतु द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक हेल्थ केयर based on the amount of money allocated to it dependent depending depends and depend देखंतु सब्जेक्ट कोन ऑफ होची प्रीपोजिशन माने पब्लिक हेल्थ केयर रो क्वालिटी विषय रे हमें प्रायोरिटी दबा तो क्वालिटी टा कोन सिंगुलर दैट्स व्हाई ऑफ सिंगुलर इज डिपेंड्स ऑन इज योर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 the recent lawsuit dash put the team in a tight spot the recent lawsuit कोन हिजबो इठी ए हिजबो has singular use on has put the team in a tight spot next question number 52 poverty was staring her dash the face poverty was staring her in the face माने कोन फेस रे देखा जाउछ इन इज योर राइट आंसर ठीक अछि फेस सम्मुख रे ए सेंस रे we respect you but we don't agree to your idea habo or with your idea habo agree सहित कोन यूज करन हम agree with is what agree with your ideas okay option C is your right answer next today computer virus spread dash a design speed dash way of life dash way of file downloads देखो स्पीड पे हमें 8 स्पीड यूज करन ना हमें 8 को कंसीडर करिया देन dash way of file downloads dash way of file downloads by way of के द्वारा तो by को हम यूज करिया तो ऑप्शन डी आई थिंक राइट आंसर है जो today computer virus spread at a dashing speed by way of
file downloads. Option D is your right answer. Next, she has inherited her fondness dash tennis from her parents. देखो जदि फंड आसीबो सिंपली फंड सहित आमे कोन यूज करंती फंड ऑफ यूज करंती एटी फंडनेस अछि फंडनेस सहित फिक्स प्रीपोजिशन आसीबो फॉर कोन आसीबो फॉर इज द राइट आंसर फंडनेस और हबो राइट आंसर मन रखंतु नेक्स्ट eggs are sold dash the dozen eggs are sold by the dozen हबो कि बाई हबो ना कोनसी माप करिवा किबा ओजन करिवा सेंस रे मध्ये हमें बाई यूज करंती मन रखंतु by the dozen. Next, question number 57 and 58 try करंतु. He was born in business family and has a natural aptitude dash business. Aptitude गोटे skill सही सेंस रे हमें कौन यूज करिवा aptitude 8 हबो और aptitude 4 हबो natural aptitude for business में एठी appropriate लागुची 4 is your right answer. Okay, Vivek has the strong resembles dash his grandfather. resembled सहित टू कहि परिबा resemblance to his grandfather. Option D is your right answer. Next, the fan was directly on contact of surface रे नाही 8 गोटे सेंस रे नाही किबा below my head हबनी over हे जिवो ठीक अछि ऊपरे with गोटे covering सेंस रे. This visit will not interfere dash our plan. This visit will not interfere dash our plan. Which option is you? Interfere with our plan is you. Okay, with माने बाधा देबो नाही ठीक अछि जदि हमें interfere in करिवा अजोधारे हस्तक्षेप करिवा अर्थ तो इट with appropriate हबो. Next, though I am tall I feel inferior dash others. Though I am tall I feel inferior to others. To others is your right answer. Next, the origin of ice cream dates back देखंतु गोटे फ्रेज हे जाउची dates back to आसीबो ना date back to हम यूज करंती to nearly half a century. Option A is your right answer. Next, I congratulated him as his promise on his promise. Congratulations सहित generally on fixed preposition आसे right on is your right answer. Next, he is addicted to alcohol and exerts a bad influence as his family. Influence सहित केउ fixed preposition आसीबो influence सहित केउ fixed preposition आसीबो कोंतु influence सहित on कहि परिबा कि influence on his family on तो appropriate लागुची. Next, they were astonished as his failure in competition. या सहित कोन लगंती आपण astonished सहित केउ fixed preposition यूज करंती at is your right answer. Next, the accident occurred in the dash of the road. देखंतु in the already अछि माने कोन in माने से middle रो कथा कोआ जाउची middle of the road is your right answer. Next, she is highly skilled at dealing with difficult customers हबो और on dealing हबो. Which option is your 8 ही हबो 8 is your right answer. 8 ठीक कहूची 8 I think. Next, the vase broke as the pieces when Simran dropped it. माने कोन हबो भांगी जिबा सेंस रे कहबा तो broke into माने भांगी जिबा सेंस. Next, I am short of got a phrase I am short of funds at the moment so I can pay you back next week. Next, there was a heated discussion as two members of the club. Two members माने between more than 12 among मध्य between two members of the club. Next, there is no information as the company's profit in the report. There is no information सहित about अछि information about the company विषय रे
Next, plants do not have light dash their own. Plants do not have light of their own. Of is your right answer. Option C. Next, he obtained 80% marks in science in high school. He has qualified dash the science stream in +2. Qualified सहित कौन आसिबो preposition. He has qualified for the science. Qualified सहित for use करा जाए. Next, do not meddle dash the affairs of others. Do not meddle in the affairs माने सही affairs मध्य affairs को कहीं जिबे. Next, आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु. क्वेश्चन नंबर 75. प्लीज साइन these documents dash ink so that they can be preserved. देखो ये ओनली इंक रो कथा कह जाउची. ये पेन थिले कौन से टूल पाई हमें विथ यूज करथांते. इंक इन इंक कहि दवा. से इंक रे से सेंस रे इन इंक इज राइट आंसर. तो आउट ऑफ 75 आपण केतोटी प्रश्न करि पाउछंती. आपण कमेंट सेक्शन रे निहाती जणांतु. क्लास टी को लाइक करबा सहित शेयर करंतु. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास.